Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 16. In this video session guys, we will discuss about the components in Vue.js application. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear concept about part number 16. And also guys, अभी तक हमने जितना भी कोड किया हुआ है अपने इस Vue.js tutorial में सारे कोड को हमने इस GitHub रिपोजिटरी पे अपलोड किया हुआ है। आप वहां से सारी फाइलों को R&D कर सकते हो और वहां से कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो। So just back to our editor and this is our part 16. Okay, so video 16.html and video 16.js, these two files are responsible for this video session. Okay, so guys, इस video session में हम components के बारे में discussion करने वाले हैं। So far हमने अभी तक दो div बनाई जहां पर by the help of these two corresponding IDs we have created the two Vue instances as you can see. And also guys, if this is your first video session then I strongly suggest you to watch our part 15 जहां पर हमने multiple Vue instances in Vue.js application में बारे में discussion किया था। So basically guys, what are Vue components? So Vue components are called reusable markup of HTML, जहाँ पर हम markup of HTML को reusable code के जरिए और उसे हम reuse करते हैं अपने Vue.js application में। Okay, so कैसे करते हैं? So let's define a Vue component. How can we define that? Syntax is called Vue dot component. Okay, Vue dot component and parenthesis symbol. First parameter takes the name of that component. Okay, so let's define the component called OWT, that is online web tutor. Okay, and the second, it's an object. इसके अंदर हम अपने इस component जो कि हम create कर रहे हैं इसके कुछ property को हम set करते हैं. So just and inside this object the first parameter that we need to pass called the template property. Okay, let's say template. इस टेम्पलेट के अंदर गाइज हम अपने इस कंपोनेंट जो कि OWT हम बनाने जा रहे हैं इस OWT के टेम्पलेट को हम डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डिफाइन दैट। फर्स्ट वी नीड टू गिव द पैराग्राफ टैग। ओके, यहाँ पर आप कोई भी HTML मार्कअप को आप यूज कर सकते हो। सो वी नीड टू डिफाइन कॉल्ड पैराग्राफ टैग। हमने पैराग्राफ टैग डिफाइन किया फॉर नाउ। ओके, सो लेट्स राइट सम ऑफ द पैराग्राफ्स इनसाइड दैट। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन वेब ट्यूटर मार्कअप। ओके, अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? सो जस्ट गो टू HTML फाइल एंड नाउ जस्ट कॉपी दिस कंपोनेंट नेम OWT. Go inside this instance and let's define called OWT. Basically OWT is now become a tag. Okay, this is a tag called Vue component. Basically हमने यहाँ पर एक component define किया हुआ है and this is the component name. By the help of this component name actually we have created a tag of that component. Okay, so अगर मैं इसे copy कर लूँ, मैं अगर यहाँ पेस्ट कर दूँ अपने इस सेकंड ऐप के अंदर, just save this file, go to browser, refresh that page and now as you can see this is online web tutor markup. Okay, so guys हमने एक ही component बनाया अपने Vue.js application में and now we have used this component means Vue component OWT in two ways in two Vue instances. This is called as the reusable markup of HTML, जहाँ पर हमने एक HTML के थ्रू हमने reuse किया इसे 2 times. आप इसे अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो. ओके, अब हम इस टेम्पलेट के अंदर जो कि हमने डिफाइन किया हुआ अपने OWT व्यू कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर मेथड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके अंदर अपने कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ को भी हम रन कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट हैव अ लुक अबाउट दैट हाउ कैन वी पास आवर डेटा प्रॉपर्टीज़. ओके, सो बेसिकली जैसे हम डेटा प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं गाइज अपने व्यू इंस्टेंसेस के अंदर, अगर आपको याद हो दिस इज द डेटा ऑब्जेक्ट. बाय द हेल्प ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट वी कैन पास एनी ऑफ द पैरामीटर इनसाइड देयर करस्पॉन्डिंग respected EL property elements. Okay, so हम यहाँ कैसे पास करेंगे? So just we need to define the data object and basically data object inside this view component is basically a function. Okay, so let's define a function and why it is a function, ये function क्यों है इस view component के अंदर, we will discuss later. Okay, so basically now we are going to return and let's say that this is another object and let's define called name. Okay, so let's online web tutor and the second property that we need to define called author. Okay, so basically these are the two properties that we have set inside this data object. Okay, अगर हम इस data object के अंदर से अगर हम इन parameters को read करना चाहें basically इस template file पे, so just let's say that author
or let's say channel name, colon symbol, and by the help of the curly pairs, जैसा कि हम अपने सिंपल EL property मीन्स इन divs के अंदर करते थे. Basically by the same way we need to use the curly pairs, and let's say that if we want to retrieve the name property, so let's say that name. Okay, and now if we want to retrieve the author name, let's say author, curly pairs, and let's say author. ओके सो जैसे हम इसे सेव करेंगे गाइस, सेव करने के बाद अगर ब्राउजर पे जाएंगे, जस्ट रिफ्रेश दैट पेज, एंड नाउ एज यू कैन सी चैनल नेम ऑनलाइन वेब ट्यूटर एंड ऑथर इज संजय. Okay, this is called passing data properties inside to our template section of view component. Okay, जहाँ पर हम अपने view component के template section में हमने अपने data properties को pass किया. Okay, also as well as we can execute the methods inside this. Okay, अगर हम कोई method define करना चाहें या method के through call करना चाहें अपने template के अंदर, तो हम वो भी कर सकते हैं. Okay, so just go outside of this data object. Let's define the methods in the same way that actually we define inside this view instances. Okay, same way से हम यहाँ पे define कर सकते हैं. Okay, let's say method 1 function, and it returns, let's say that return this is view component. Okay, so अगर मैं इस method नाम को execute करना चाहूँ इस template के अंदर, so just go outside of that and let's say that method running colon symbol, and for the method name and the parenthesis symbol. Okay, so just save this file, go to browser, refresh that page, and as you can see method running, this is view component. ओके सो हम अपने टेम्पलेट सेक्शन के अंदर गाइस इस व्यू कंपोनेंट के अंदर अगर किसी मेथड को कॉल करना चाहें, हम उसे भी कॉल कर सकते हैं. एज वेल एज अगर हम किसी कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन करना चाहें अपने इस कंपोनेंट के अंदर, तो ऑल्सो वी कैन डिफाइन द कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ एज वेल. ओके, लेट्स से दैट फर्स्ट, और लेट्स से कंप्यूटेड 1, basically this computer properties will gives a simple message. Okay, let's return, let's say simple message. Okay, so इसे हम सेव कर देंगे. सेव करने के बाद अगर इस कंप्यूटर प्रॉपर्टी को अगर कॉल करना हो इस टेम्पलेट सेक्शन के अंदर, so just go up or let's make call of that computer property just separate with comma, and let's computed curly pairs computer properties. और now हम parenthesis पास नहीं करेंगे क्योंकि हम computer properties को कॉल parenthesis के बिना करते हैं. Okay, so just save this file, refresh that page, and now as you can see computed simple message. So basically guys what we did so far, हमने अभी तक क्या किया, we have defined a view component which is basically a reusable markup of HTML, जहाँ पर हमने एक कोड बनाया, एक मीन्स अपने व्यू कंपोनेंट को क्रिएट किया विद द नेम ऑफ OWT. इस OWT टैग के को यूज़ हमने दो जगहों पे किया और हमने HTML मार्कअप को हमने रीयूज़ किया. इस मार्कअप मीन्स इस टेम्पलेट के अंदर हमने डेटा ऑब्जेक्ट को भी पास किया, मेथड्स भी कॉल करी और कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ भी कॉल करी. ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द व्यू कंपोनेंट. ऑल्सो गाइज अब हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिफाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ कि इनसाइड दिस टेम्पलेट अगर मैं इस टेम्पलेट सेक्शन को कट कर लूँ, लेट्स कट दैट और कॉपी दैट, गो टू एडिटर एंड लेट्स से दैट दिस इज़ द कंपोनेंट दैट वी हैव डिफाइंड. ओके, अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ, सो नाउ इस टेम्पलेट सेक्शन के अंदर गाइज हमें एक पेरेंट डिव डिफाइन करना होता है अपने व्यू कंपोनेंट में. ओके, सो फॉर नाउ वी हैव डिफाइंड दिस पैराग्राफ टैग. ओके, दिस पैराग्राफ टैग एक्ट्स एज द पेरेंट टैग. ओके, सो जितनी भी कोडिंग हमें करनी है हमें इस पैराग्राफ टैग के अंदर करना है. ओके, अगर हम इस टैग के अलावा अगर हम बाहर कोड करने की कोशिश करें, द व्यू कंपोनेंट विल गिव्स यू द एरर. ओके, अगर हम कोई नया एलिमेंट भी डिफाइन करना चाहें div, then the view instance or the view component will give you the error compiling template. ओके, टेम्पलेट कंपाइलिंग की एरर आएगी. सो बेसिकली हम देखते हैं. सो अगर मैं डिफाइन करूं एक और प्रॉपर्टी को, लेट्स से दैट अनदर पैराग्राफ टैग, क्लोज, एंड लेट्स से दैट सेकंड पैराग्राफ. ओके, सो अगर मैं इसे सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिफ्रेश करूं, एंड नाउ वी हैव अ एरर, एंड एरर इज दैट एरर कंपाइलिंग टेम्पलेट. दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन वेब ट्यूटर एंड समथिंग एल्स. ओके, सो इस एरर को हमें रिमूव करना होगा गाइज. इस एरर को रिमूव करने के लिए बेसिकली व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हमें जो भी व्यू कंपोनेंट में जिस टेम्पलेट को डिफाइन करना हो, वी नीड टू गिव अ पेरेंट एलिमेंट.
ओके अगर हमें इन दोनों एलिमेंट्स को अगर यूज करना हो लाइक div एंड पैराग्राफ, तो वी नीड टू रैप दिस थिंग्स इनसाइड अ पेरेंट div। ओके इस पेरेंट div के अंदर उन सारे कोड्स को करना होगा। मीन्स कहने का मतलब है गाइस कि हमें अगर किसी भी तरीके की कोडिंग करनी है, सो ऑल द कोडिंग्स एक्चुअली गो इनसाइड अ पेरेंट एलिमेंट। ओके सो अगर हम इस पैराग्राफ टैग को अगर अटैच करना चाहते हैं, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन अनदर div tag एज अ पेरेंट टैग। Go the last section and let's close this div. Okay, so if we save this file, refresh that browser, and now the error has gone. So back to our editor. अगेन हम कोई पैराग्राफ अगर डिफाइन करना चाहें, सो इस div एलिमेंट के अंदर हम एक और पैराग्राफ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं इस कंप्यूटर प्रॉपर्टी को यहाँ से कट कर लूँ, ओके कट करने के बाद अगर मैं इस पैराग्राफ टैग में से डिफाइन कर दूँ, इट्स ओके। ओके और अगर जो मेथड हमने कॉल किया हुआ, अगर हम इस मेथड को भी कट कर लें, लेट्स कट दिस मेथड फ्रॉम हेयर। ओके और इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगर हम इसे पेस्ट कर दें, सो जस्ट सेव दिस फाइल, रिफ्रेश दैट, एंड एज यू कैन सी दैट दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, this is our second paragraph, and this is third paragraph, and all these paragraphs actually are binded inside this parent div। ओके जो कि हमने div बनाया हुआ है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, सो जस्ट इंस्पेक्ट दैट, तो आप देख सकते हैं गाइस कि जो हमने अपने OWT टैग को यूज़ किया हुआ है, OWT टैग डज नॉट अपीयर, यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही है, बिकॉज जो कंपाइलर होती है गाइस हमारे Vue.js एप्लीकेशन की, व्हाट एक्चुअली इट विल डू, इट डज दैट व्हेन वी राइट OWT, जैसे हमने OWT फाइंड किया, देन Vue.js एप्लीकेशन बेसिकली फाइंड्स दैट OWT इज डिफाइंड विद इन दिस Vue कंपोनेंट और नॉट, Vue कंपोनेंट OWT के नाम से एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओके सो बेसिकली लेट मेक इट एज OWTR and something else, refresh that page and go to console, and as you can see unknown custom element. Okay, this is custom element. Did you register the component directory correctly? Okay, so this is the meaningful error we can understand from console. Okay, so now get rid of that and let's refresh that page, and the error has gone. Okay, so successfully guys we understood about the basic concepts of the complete concept, as you can see that about the Vue component in Vue.js application। ओके जहाँ पर आप मल्टीपल नेम के मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो और इन टेम्पलेट्स पे अपने डेटा ऑब्जेक्ट, मेथड्स एज वेल एज कंप्यूटर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो। हम अपने व्यू कंपोनेंट के जरिए गाइज हम किसी भी अपने बाइंड इवेंट्स में जितने भी हमने इवेंट्स पढ़े हैं, हम उस इवेंट्स को भी फायर कर सकते हैं। ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू मेक इनसाइड दिस थर्ड पैराग्राफ टैग, लेट्स आई एम गोइंग टू मेक अ बटन। Okay, this is a button I'm going to make inside this template, and let's say that click me. Okay, and basically it will fire an event called @symbol click equal to fire me. Okay, this is the function name, so just copy this function name, go inside your methods, and let's define a method called fire me, and basically it's a function, it will return a simple message. Okay, let's say return fire me method. Okay, so if we save this file, again go to browser, refresh that page, just back to our browser, and let's say that instead of this message, let's say console.log. Okay, console.log. so just save this file, refresh that page. So once we click on this button, the message will fire up inside the console. Just click on that, and as you can see, method is now firing. Okay, and lastly one more thing guys, we need to understand that why actually we have defined the data object as a function. Okay, हमने इस डेटा ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन की तरह क्यों डिफाइन किया हुआ है। सो बेसिकली अगर मैं फायर में इवेंट पे जाऊं, लेट्स डिफाइन दैट, हम क्या करते हैं गाइस कि अपने इस ऑथर नेम को चेंज करते हैं ऑन क्लिक इवेंट। ओके सो लेट्स से दैट दिस डॉट ऑथर, एंड लेट्स से दैट संजू फॉर नाउ। This is the name that I have to assign with this author. Means first of all we will get the author name. जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, then the fire me event will fire and it will change the name of the author. Okay, so just save this file, go to browser, and now as you can see this is Sanjay and this is Sanjay. Just click on that, and as you can see the author name has changed for the first view in component instance. Okay, जो कि first component हमने बनाया हुआ for OWT, it has changed the name of this author, but now it remains unchanged. Okay, again refresh that page. Now I am clicking on this button. Now corresponding
this instance or this name actually changes. Just click on that and as you can see ये change हो चुकी है और as it is हमारी ये name as it is है. Okay, so back to our editor and now go to JS file again. अगर मैं कोई data object अगर define करूँ यहाँ, let's say var, let's say that name या data, it's an object. ओके इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम नेम पैरामीटर डिफाइन करें, लेट्स से संजय. ओके और इस नेम के अंदर अगर हम एक और पैरामीटर डिफाइन करें, लेट्स से ऑथर, और लेट्स से जस्ट कॉपी दिस ऑथर, पेस्ट एंड लेट्स से संजय हेयर एंड नेम शुड बी समथिंग कॉल्ड OWT. ओके और ऑनलाइन वेब ट्यूटर, सो जस्ट मेक कॉपी ऑफ दैट, पेस्ट हेयर. ओके अब हम क्या करेंगे, इस डेटा ऑब्जेक्ट को गाइज हम पास करने वाले हैं अपने इसके अंदर, फंक्शन के अंदर. सो जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दिस रिटर्न एंड लेट्स से दैट रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट. ओके सो जैसे ही हमने उस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा करके हमने एक ऑब्जेक्ट रखा. ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल, go to browser, refresh that page, and now as you can see author equal to Sanjay. Just click on that and remember here is Sanjay also. Okay, so just click on that and as you can see Sanju becomes the author name for the both two cases. Okay, दोनों जगह पे वो नाम अपडेट हो चुकी है. Okay, to keep the name unchanged in the second instance of this div id, we need to actually keep something like that. Okay, that's why this is a function of data object inside this view component. ओके अगर ये फंक्शन नहीं होती, अगर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट होती हमारे इस कंपोनेंट में, तो होता गाइस कि अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू को अपडेट करते हैं, इट विल रिफ्लेक्ट टू ऑल ऑफ द व्यू कंपोनेंट्स. ओके लेकिन क्या होता गाइस कि अगर हम जैसे इस कंपोनेंट को हमने यूज़ किया अपने इस div के अंदर, इस व्यू इंस्टेंस के अंदर, जैसे हमने क्लिक किया, सो बेसिकली करस्पॉन्डिंग व्यू इंस्टेंस एक्चुअली विल गेट अपडेटेड. ओके करस्पॉन्डिंग इंस्टेंस अपडेट होती है, ना कि सारे इंस्टेंस अपडेट होने के अलावा. Okay, so this is why actually we use, or the Vue.js application uses the syntax concept of this data object inside this view component, which is basically different from these instances. Okay, यहाँ पर कोई function नहीं होती, यहाँ पर simple हम object define करते हैं. But basically to define the data object inside this view component, first we need to define that function. Okay, this is the complete concept of guys view component in Vue.js application. Okay, so if you have any doubt in this video session guys, then just drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.